Hello students and welcome to everyone present here. As you know that we are discussing the chapter Nationalism in India, and now it is time to discuss about the launch of non-cooperation and Khilafat movement. And it was organized by Mahatma Gandhi in January 1921. But prior to start this topic, let me have once again recapitulation of the earlier topics. First of all, we had discussed about the effect of First World War on Indian economy and the society. Then we had discussed about the three successful Satyagraha movement organized by Mahatma Gandhi at Champaran, Kheda, and one in supporting the cotton milk workers in Ahmedabad. And all these Satyagraha movement were successful. After getting success in all these three Satyagraha movement, Gandhiji got some encouragement and he got emboldened and he thought to organize a nationwide Satyagraha. And he got the opportunity in the backdrop of the proposed Rowlatt Act. And Mahatma Gandhi organized the nationwide Satyagraha against proposed Rowlatt Act in April 1919, and this was somehow a large scale movement, but it was only confined to town and cities. And this movement was brutally curbed by the Britishers at last, and when it took the shape of violence, Mahatma Gandhi called off this movement. After end of the Rowlatt Satyagraha movement, Gandhiji visualized the thing that this movement was only confined to the town and cities. And Gandhiji willing to pressurize the British government to provide the Swaraj to Indians. So he thought that unless and until a large scale movement, a widespread movement incorporating all social groups and starting from right through the villages and tribals area to the town and cities, then that will be not strong enough to make pressure on the British government. And he was also willing to incorporate the Muslim community along with his movement. And somehow he got the opportunities because after the end of the First World War, the Ottoman Turkey had lost the war, and it was rumored that the British government was going to impose a harsh treaty against the Sultan of the Turkey, who used to be the spiritual leader of the Muslim community known as Khalifa. So when the Muslim of India in India heard the news of imposition of the harsh treaty against the uh, Sultan of Turkey, who used to be their spiritual leader, it was quite natural that they will oppose it. And Mahatma Gandhi took this opportunity, and Muhammad Ali and Shaukat Ali came forward. A Khilafat committee was formed, and Muhammad Ali and Shaukat Ali were the front runner leaders to start the Khilafat movements to oppose the Britishers on the side of the Muslim. Then Mahatma Gandhi was also willing to organize his own movement, and Mahatma Gandhi was of the planning to organize a non-cooperation movement. Mahatma Gandhi had written in his book Hind Swaraj in 1909 that the British Empire in India has evolved. भारत में ब्रिटेन की साम्राज्य धीरे धीरे विकसित हुई है एंड सर्वाइव्ड और अभी तक जारी है ड्यू टू द कॉपरेशन ऑफ इंडियंस. So if the Indians withdraw back their support, the British Empire will collapse within a year. अगर भारतीय लोग अपना सपोर्ट वापस ले लेते हैं तो ब्रिटेन की साम्राज्य एक साल के अंदर ही नष्ट हो जाएगी और स्वराज हम लोगों को मिल जाएगा. बट हाउ दिस नॉन कॉपरेशन में टर्न अ फेस ऑफ मास मूवमेंट, इट वाज a big question, and Mahatma Gandhi proposed some strategies how to organize the non-cooperation movement. He proposed that this non-cooperation movement will unfold in different stages. First of all the government titles will be returned back and surrendered by the Indians back to the governments. तो जो भी पदवियां और सरकारी तगमे जो भारतीय लोगों को प्रदान की जाती थी ब्रिटिश सरकार के द्वारा, वो उनको लौटा दी जाएगी. एट द सेकेंड स्टेज देयर विल बी बॉयकॉट. सेकेंड स्टेज में बहिष्कार होगा. क्या क्या चीज़ का बहिष्कार होगा? देयर विल बी बॉयकॉट ऑफ ऑल ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस. सारे ब्रिटिश सरकारी तंत्र के संस्थाओं का बहिष्कार होगा. ब्रिटिश आर्मी, ब्रिटिश पुलिस and the courts, school, colleges, all will be boycotted. And then there will be boycott of foreign clothes as well as foreign goods. विदेशी वस्तुओं का, विदेशी कपड़ों का भी बहिष्कार होगा.
So this was the planning of Mahatma Gandhi. But there was a problem within the Congress. Some leaders within the Congress were not happy of the proposal of Mahatma Gandhi. They were reluctant to boycott the council elections, which was also proposed in the non-cooperation movement. Gandhiji has told to boycott the non-cooperation council election also, scheduled in November 1920. So there was tussle within the Congress whether to organize or not. But finally, Mahatma Gandhi became successful in the Congress session of 1920 to persuade all the Congress leaders to launch a non-cooperation movement. तो सितंबर 1920 के कलकत्ता के अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के सभी अन्य नेताओं को इस बात के लिए राजी कर लिया कि नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट होगा. एंड इन दिसंबर 1920 Congress session at नागपुर, महात्मा गांधी adopted the non-cooperation movement. तो दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में नॉन कॉपरेशन का प्रोग्राम को अडेप्ट कर लिया. प्रोग्राम को मैंने कांग्रेस पार्टी ने मान लिया. Then now let us, it is time to see how this movement unfold and who participated in this movement and which different types of social group participated in this movement and how they conceived the meaning of Swaraj. But prior to reading about the non-cooperation Khilafat movement organized in January 1921, there were few incidents which had already taken place in Indian history, freedom struggle, and let us have a look. There may be also held responsible to starting a non-cooperation movement, Mahatma Gandhi. And these are such types of incidents. First, the First World War added to the misery of the Indian people. Heavy taxes, high prices, famines and epidemics made people life miserable. तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो बुरा प्रभाव पड़ा था भारतीय अर्थव्यवस्था और समाज पर, टैक्सेस बढ़ गए थे और चीज़ें की दाम बढ़ गई थी, अकाल भी पड़ा था, महामारियाँ भी फैली थी और लोगों का जीवन चैनी हो गया था. तो एक तरह से लोगों में आक्रोश था. रॉलेट एक्ट का लार्ज स्केल पर प्रोटेस्ट हुआ था, ये भी एक इंसिडेंट हो चुका था. जलियांवाला बाग जैसा आनंदीय मतलब एक निंदनीय घटना भी हो चुकी थी और पंजाब के लोगों के साथ अन्याय हुआ था. मुस्लिम कम्युनिटी तो ऑलरेडी अनहैप्पी थी, हॉस्टिलिटी थी अगेंस्ट द टर्की who used to be the spiritual leader of the Muslim. So at lastly at Nagpur session of 1920, the Congress adopted the Gandhi's idea of non-cooperation. There are some features of non-cooperation movement prior to starting, which were the different social groups who participated in it and how they conceived their meaning of Swaraj. We should have a brief look of the non-cooperation movement. That non-cooperation movement was launched by Mahatma Gandhi in January 1921. It aimed at protesting against the injustice done to the people of Punjab and the Turkey and to attain Swaraj. And the middle class led the movement in town and cities. Educational institutions, law, courts and foreign goods were boycotted. As far as the village area is concerned, peasants organized movements against talukdars and landlords in large villages of Awadh and leadership of the Baba Ramchandran. Tribal people started an armed struggle in the Guddam hills of आंध्र प्रदेश अंडर द लीडरशिप ऑफ अल्लूरी सीतारामन राजन. तो आंध्र प्रदेश की पहाड़ियों में एक हिंसात्मक ढंग की गुरिल्ला लड़ाई भी हो रही थी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान. एंड वर्कर्स इन द प्लांटेशन ऑफ असम स्टार्टेड ए स्ट्रगल टू गेट द राइट टू फ्री मूवमेंट. और असम के चाय के बागानों में जो कामगार करने वाले व्यक्ति थे, मजदूर थे, उनको घर जाने की छूट नहीं रहती थी, उनको स्वतंत्रता नहीं थी. तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में वो भी इस का मायने लगाया कि हमें अब घर जाने की छूट मिलेगी, गांधी राज आ रहा है. But this movement was called off in February 1992 by Mahatma Gandhi due to being violent at Chora Chori in Uttar Pradesh. So now we see in details how this movement unfolded. First of all, we will see the different strands in the movement, and these different strands starts with the movement in town and cities. Educational middle class led the movement in town and cities. Educational institutions, law courts, and the council election were boycotted.
as far as the movement, spread of movement in town and cities is concerned, the middle class people participated in educational middle class, शिक्षित मध्यम वर्गीय भारत की उन्नीस में भाग लिया शहरों में और कस्बों में जितने भी सरकारी संस्थाएं थी, कोर्ट कचहरी थी, स्कूल कॉलेज थे और काउंसिल इलेक्शंस थे, उसका बाइकाट किया गया. फॉरेन क्लॉथ्स वेयर एंड अदर गुड्स वेयर बर्न्ड इन बॉनफायर. विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हो गया. पीपुल बिगैन टू यूज खादी क्लॉथ्स, और लोगों ने खादी क्लॉथ्स पहनना शुरू कर दिया. गवर्नमेंट सर्वेंट रिजाइंस देयर जॉब्स, लिकर शॉप्स वेयर पिकेटेड. तो वो लोगों ने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी, स्कूल हेड मास्टर टीचर सभी ने नौकरियां छोड़ दी और शराब की दुकानों पर धरने दिए गए. बट इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम नन कॉपरेशन मूवमेंट स्लोड डाउन इन टाउन एंड सिटीज बिकॉज. लेकिन धीरे धीरे टाउन और सिटीज में ये नन कॉपरेशन मूवमेंट धीमा पड़ गया. व्हाट इज द रीजन? फर्स्ट ऑफ ऑल, khadi clothes were very costly. The poorer were not able to buy them, as the people of India had boycotted the use of foreign clothes. So during how much time they may boycott the foreign clothes, milk clothes, because khadi used to be not cheaper item for them. They were not able to purchase the khadi clothes. It was not cheap to the poor people. So this was the one problem. And the another problem that Indians boycotted British institutions like law courts and educational institutions, but alternative institutions did not come up. So people had to stop the boycott. And even the institutional educational institutions like school, college, and courts were boycotted by the people. But the Indian had not set up their alternative institutions for this purpose. So at how much duration they may boycott these things? So in due course of time, the lawyer, the teachers started to return back to their institutions. So due to being the khadi cloth not very cheap and out of reach of the poor people, due to being themselves not able to purchase it, and due to non-availability of the alternative institution in town and cities like schools and colleges and courts by the side of the Indian people, the movement slowed down in town and cities and people started to return back their institution. Then we will see the another aspect of this movement in village side. Peasants movement. In village side, the non-cooperation movement organized by the peasants. In Awadh, peasants movement were organized by Baba Ramchandran. The peasants of Awadh were very much unhappy against the big landlords and talukdars and zamindars, because big landlords and talukdar and zamindars used to collect taxes from the peasants very rudely, and they used to compel them to work as a beggar. So the peasants were looking some freedom to pay the taxes to the zamindars, and some peasants had also planned to boycott the zamindars and talukdars with nai thobi band hartal. It means if some crude zamindars and peasant landlords will be stop the facilities of nai and thobi, and they got support of the Baba Ramchandra. And Jawaharlal Nehru and Baba Ramchandra had visited and had heard the grievances of the peasants in Awadh, and 300 committees of Awadh Kisan Sabha were set up. So it was against the landlords and talukdar. Reduction of rent and the abolition of begar were their main demands. The peasants of Awadh, they put forward their demand: reduction of rent and abolition of begar. They formed Awadh Kisan Sabha. Baba Ramchandra, he led the peasants movement in Awadh against talukdar and landlords. जैसा पहले ही बताया गया, talukdar और बड़े जमींदारों के अगेंस्ट में ये था मूवमेंट. talukdar भी एक तरह के बड़े जमींदार ही होते हैं. He demanded reduction of rent, abolition of begar, and boycott of land sorts. In October 1920, he formed Awadh Kisan Sabha with the help of Nehru. So we see the in village side the non-cooperation, during non-cooperation movement, the movement was organized by the peasants against the landlords and talukdar for the reduction of rent and stop the practices of begar, and also to boycott the cruel landlords and talukdars. But when and it was got support by the Baba Ramchandran, and Awadh Kisan Sabha was formed. But when the movement spread in village side, these peasants took a different meaning of Swaraj.
What they started to do, they started to do that one thing, that they started to attack on the houses of landlords. They started to attack on the marketplaces. They started to loot the uh, grain warehouses. तो मार्केट पर अटैक करने लगे, तालुकदारों जमींदारों के घरों पर अटैक करने लगे, अनाज के गोदामों को लूटने लगे. एंड सम लोकल लीडर यूज टू से दैट गांधी राज इज कमिंग एंड द तालुकदार एंड जमींदार जमीन विल बी सीज्ड एंड विल बी गिवन बैक टू द पीजेंट्स. So the Congress was not happy with such types of vision of the peasants, because Congress was always with the support of non-violent way of movement. But here the peasants started to attack the talukdars and jamindar houses, started to doing some violent act. Anyway, their peasants' perceptions about the non-cooperation movement was different and was not according to the theory of Congress and Mahatma Gandhi. As far as tribal are concerned, the colonial government had already imposed restriction on the tribals people to enter into the village and collect the firefoods and their livelihoods items. So the peasants were, the tribals were very unhappy. And in Guddam Hills of Andhra Pradesh, tribals started a movement under the leadership of अल्लूरी सीतारामन. तो आंध्र प्रदेश की पहाड़ियों में एक गुरिल्ला टाइप का हिंसक लड़ाई चल रहा था और इसके नेता थे अल्लूरी सीतारामन राजू. ट्राइबल्स वांटेड टू गेट बैक देयर ट्रेडिशनल राइट्स ओवर पावर. ट्राइबल की लड़ाई का एक ही मुद्दा था कि उनको अपने फॉरेस्ट में जानने का जो परंपरागत अधिकार है वो मिलना चाहिए. द मेथड्स फॉलो बाय द ट्राइबल्स एंड द पीजेंट्स वेयर अगेंस्ट द गांधी जी मेथड ऑफ नॉन वायलेंस. लेकिन ये जो पीजेंट्स थे और ये थे, इनका जो था मेथड वो सही नहीं था, वो उनका सही मेथड नहीं था. क्या था उनका मेथड? द मेथड फॉलोड बाय द ट्राइबल्स एंड द पीजेंट्स वेयर अगेंस्ट द गांधी जी मेथड ऑफ नॉन वायलेंस. दे फॉलोड वायलेंट मेथड्स ऑफ स्ट्रगल. अल्लूरी सीतारामन राजू, he led a movement of tribal people in the Guddam Hills of Andhra Pradesh. Many people considered him as an incarnation of God. They believed that he had many special powers. He supported Gandhiji and asked his followers to wear khadi and stop drinking, but he organized an armed struggle against the British. So Alluri Sitaraman was a very peculiar figure. He had led the movement of guerrilla type in Guddam Hills of Andhra Pradesh, but it was not matching with the Gandhiji proposal of non-violent method. Although he used to say that he is very much affected by Mahatma Gandhi, he used to tell his tribal people to wear khadi clothes and even boycott the liquor. But he was not going to accept the Gandhiji idea of getting Swaraj through non-violent method. So he used the violent method and used to attack the police and police stations and kill the British officers. And he also used to say that he had some special power. The bullet cannot do anything harm to him. And people started to think him as an incarnation of God. भगवान की तरह अवतार मानने लगे थे. लेकिन बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनको पकड़ के फांसी की सजा दी थी. मूवमेंट इन द प्लांटेशन. तो अब चाय बागानों में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट फैला, तो फिर चाय बागान के श्रमिकों ने उसको किस रूप में देखा? तो वर्कर्स इन द प्लांटेशन ऑफ असम डिमांडेड द राइट टू मूव फ्रीली इन एंड आउट ऑफ द स्टेट. तो चूंकि चाय बागान में जो काम करते थे असम में श्रमिक, उनको घर आने जाने की छूट नहीं थी. इसके पीछे जो कारण क्या था? दे अपोज द इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859. तो चाय बागान में काम करने वाले श्रमिकों को एक इनलैंड माने एक एक्ट था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859, जिस पर उनसे साइन करवा लिया जाता था और वो घर नहीं जा सकते थे, फ्री मूव नहीं कर सकते. वेन दे हर्ड अबाउट द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट दे मूव टू देयर विलेज. लेकिन जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरुआत होने की बात उनके कानों में पहुंची, तो वो सोचे कि गांधी राज आ रहा है और वो घर जाना शुरू कर दिए. दे थॉट दैट द गांधी वाज कमिंग एंड एवरीवन वुड बी गिवन लैंड इन देयर विलेजेस. हाउएवर दे वर कॉट एंड ब्रॉट बैक. तो हड़ताल चल रहा था, सो दे वेयर not became able to reach their houses, home, and brought back by the Britishers. Lastly, there is going to be incident of withdrawal of the non-cooperation movement. Why non-cooperation movement Gandhi ji ne वापस ले लिया? Gandhi ji withdrew the non-cooperation movement in February 1922 because the movement became violent in some places.
In Choracheri, Uttar Pradesh, people turned violent and set fire to police station. 22 policemen were killed in the incident. Gandhiji was against violence. तो चौरा चौरी नामक स्थान में उत्तर प्रदेश में ये हिंसक हो गया नन कॉपरेशन मूवमेंट, और पुलिस थाने में आग लगा दी गई, 42 पुलिसकर्मी मारे गए, जिससे आहत होकर गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया. दो मूवमेंट स्लो डाउन इन अर्बन एरियाज. धीरे धीरे मूवमेंट स्लो भी होने लगा था शहरों में, पहले ही पढ़ चुके हैं. ही थॉट दैट इट वॉज नेसेसरी टू ट्रेन द पीपुल इन नॉन वायलेंट सत्याग्रह. तो गांधी जी ने सोचा कि अब पहले सत्याग्रहियों को थोड़ा सा ज़्यादा ट्रेन करने की जरूरत है, ये वायलेंट ना हो, और उन्होंने मूवमेंट को वापस ले लिया. तो फिर इस मूवमेंट का क्या सिग्निफिकेंट है, सिग्निफिकेंस ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. आखिर नॉन कॉपरेशन शुरू भी हुआ और बंद भी हुआ. उसमें 4 तरह के जगहों का हमने बारे में देखा कि शहरों में ये किस तरह से मूवमेंट चला, फिर उसके बाद गाँवों में अवध किसान सभा के माध्यम से किस तरह से चला जमींदारों के विरुद्ध, फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा ना कि गुड्डम की पहाड़ियों में किस तरह से इस मूवमेंट को चलाया गया, मतलब हिस्सा लिया वहाँ के आदिवासियों ने, और फिर हमने लास्ट में चाय बागान के श्रमिकों को मतलब इस मूवमेंट का क्या मीनिंग, अर्थ लगाया और किस तरह से उसका पालन कर रहे थे. अंत में इसको विथड्रॉ भी किया गया. इसका क्या महत्व है. नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज ए लार्ज स्केल मास मूवमेंट. इट अट्रैक्टेड कॉमन पीपुल फ्रॉम ऑल सोशल ग्रुप्स. तो लॉरेट सत्याग्रह के बाद भारत की आज़ादी की लड़ाई में ये सबसे बड़ा मूवमेंट था, और इसमें मतलब बहुत सारे लोगों ने भाग लिया था, और सभी समूह के सभी वर्ग के लोगों ने भाग लिया था. Non cooperation movement and खिलाफत movement went together, so they promoted Hindu Muslim unity. Non cooperation movement और खिलाफत movement दोनों साथ साथ जनवरी 1921 में शुरू हुए थे, और इससे हिंदू मुस्लिम यूनिटी में भी बढ़ावा मिला था. Peasants and tribals movement became a part of the Indian national movement. नन कोऑपरेशन मूवमेंट ये पहला मूवमेंट था कि अब किसान और आदिवासी भी गांधी जी के साथ आंदोलन में जुड़ने लगे थे. इट वॉज ए नन वायलेंट मूवमेंट, सो इट पॉपुलराइज्ड द गांधीयन आइडिया ऑफ नॉन वायलेंट सत्याग्रह. चूँकि गांधी जी तो हमेशा सत्याग्रह और नॉन वायलेंट मेथड में ही आंदोलन करना चाहते थे, और जब भी आंदोलन वायलेंट होता था उसे वापस ले लेते थे. तो इस तरह से गांधी जी का अब भारत में मतलब एक तरह से पूरी तरह विख्यात हो चुके थे, और उनका जो आइडिया था नॉन वायलेंट मेथड का. इस प्रकार से हम लोगों ने ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का डिस्कशन किया. ओके.